we'll figure a solution. Lage raho. Just perseverance is, when entrepreneurs say that perseverance is the biggest thing that you can have and you just have to be at it, I think उससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं होता. ये हम लोग अपनी रियल लाइफ में रोज देखते हैं. Why of entrepreneurship and why you want to be, why are you the right person to do it? That needs to be very clear in your mind, and you have to have a very very strong reason why. मतलब passion से कोई चीज स्टार्ट करी है, मुझे नहीं पता आगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. The only thing that helps is keep a mindset of कि ठीक है प्रॉब्लम आएगा देख लेंगे, we will figure out a solution. with Dr. Aditya DECODING entrepreneurs of IIM Lucknow के इस एपिसोड में आपका स्वागत है. आज हमारे साथ एक बहुत ही खास इंसान जुड़ी है, एक मल्टीपल टाइम एंटरप्रेन्योर और एक वीसी जिन्होंने स्टार्टअप वर्ल्ड के दोनों साइड्स देखे हुए हैं और अब 2021 में इन्होंने खुद का D2C ब्रांड ZEME फ्रेश की शुरुआत की. एंड ZEME फ्रेश D2C पर्सनल केयर में एक नई कैटेगरी लेकर आया है, दैट इज फ्रेश, प्योर एंड किचन मेड फॉर्मुलेशंस फॉर modern Indian people. Ma'am, this is such an inspiring and interesting journey of yours. I really want to know what motivated you to become an entrepreneur again and start your own business in this category. आप इस journey के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? Hi, thanks Aditi. Thanks for that wonderful introduction. So yeah, basically my journey is more of I turned an entrepreneur again only because मेरी खुद की need इतनी ज्यादा थी कि मुझे genuinely since 2017 मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे. एंड उस टाइम मैंने बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स ढूंढने की कोशिश करी बिकॉज नथिंग केमिकल वाज वर्किंग except for medicinal products. Nothing else was really working, and I did not want to be dependent on those medicinal concoctions all the time because some of them also cause hormonal issues is what my gynec had told me. And इसलिए मैंने नेचुरल प्रोडक्ट ढूंढने शुरू किए. मार्केट में कुछ भी एकदम नेचुरल नहीं था जो मुझे चाहिए था जिस तरह से. सो मैंने खुद अपना घर पे जो मेरी मॉम का ओरिजिनल रेसिपी ऑफ शैम्पू बनाते थे घर पे, वो रीठा शिका आंवला से, वो बनाना शुरू किया और वो यूज करना शुरू किया. एंड उससे जो मुझे चेंज दिखा अपने बालों में, दैट हेयर फॉल तो रुका ही, इन जनरल ओवरऑल क्वालिटी, जितना मेरे बाल कभी लंबे नहीं होते थे आज इतने लंबे होने शुरू हो गए. ये सब चीज मेरे को तब समझ आई कि इन सिंपल चीजों से कितना ज्यादा फायदा हो सकता है. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि व्हाई इज इट दैट द न्यूअर जनरेशन इन इंडिया विल नेवर हैव एक्सेस टू इट. क्योंकि सब लोग, जो हम लोग की जनरेशन में तो फिर भी हमने देखा है अपने घरों में मॉम्स एंड ग्रैंड मॉम्स को यूज करते हुए. आई थिंक द नेक्स्ट जनरेशन हैज कंप्लीटली डजंट इवन हैव एक्सेस टू दीज रॉ मटेरियल्स. So which is what I started thinking about कि why it's almost like heritage, right, for us. जो हमारे यहाँ इतने सालों से चीजें यूज होती आई है, वो आगे की जनरेशन को कंटिन्यू कराना. एंड सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन कंज्यूमर एंड अंडरस्टैंडिंग उनको चाहिए क्या. तो नेचुरल स्पेस स्टडी करना शुरू किया, तब समझ आया कि नेचुरल का डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई भी ब्रांड जिस तरह से नेचुरल देना चाहिए, जिस फॉर्म में नेचुरल देना चाहिए कस्टमर्स को, जो वो मांग रहे हैं नेचुरल, वो कोई भी नहीं दे पा रहा है. एवरीबडी इज यूजिंग नेचुरल एज अ वर्ड, एज अ मार्केटिंग गिमिक, बट कोई प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं बेच रहा है आज. सो विच इज व्हाट मेड मी स्टार्ट दिस, मेड मी गिव अप माई जॉब. एंड आई रियलाइज कि यार ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है, and it will be a crime not to address it, given that I understand this space so well myself. So that's what inspired me to get back into entrepreneurship. Wow, ma'am, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स को मार्केट में एक्चुअली बहुत जरूरत है आजकल. नेचुरल के नाम पे सिर्फ प्रिजर्वेटिव डाल की एंड गिविंग मींस केमिकल ज्यादा होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत थोड़े होते हैं, एंड दे कॉल इट नेचुरल प्रोडक्ट्स. मैम, इस जर्नी में आपको चैलेंजेस तो काफी आए होंगे इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज ये काफी नया है कि एकदम फ्रेश फॉर्मुलेशंस लेके आना. तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए एंड आपने उनको ओवरकम कैसे किया? मतलब मैं अभी नहीं बोलूंगी कि ओवरकम कर लिया है, चैलेंजेस तो अभी भी आते ही जा रहे हैं. बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज व्हेन यू स्टार्टिंग समथिंग इन अ न्यू स्पेस, सबसे पहले तो समझ, क्योंकि इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है ना मार्केट में. देयर इज नोबडी टू इवन ट्राई एंड सी कि उन्होंने कैसे किया तो हम उनसे कुछ लर्निंग्स लें या हम उनके जैसा करें. सब कुछ वी हैव टू डू फ्रॉम स्क्रैच. तो प्रोडक्शन जैसे पहले घर पे बनाते थे प्रोडक्ट, फिर उसको किस तरह से कमर्शियल में लेके जाना है, उसको फिर पैकेज कैसे करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि
फ्रेश फॉर्मुलेशंस को पैकेज उस तरह से करना है कि कस्टमर को तो कोई डिफरेंस ना लगे. सो एंड इंश्योरिंग कि ड्यूरिंग ट्रांजिट उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, किस तरह से वो खराब ना हो, सो दैट वी कैन ऑल्सो शिप देम. अभी भी मतलब आई डोंट थिंक वी हैव आंसर्स टू अ लॉट ऑफ देम. हमारे प्रोडक्ट्स अभी भी हम जो शिप करते हैं सिर्फ मैक्सिमम 1 to 2 days डिलीवरी रेडियस में ही कर पाते हैं, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं उनको तो हम 1 day डिलीवरी में ही भेजते हैं. काफी जगह मना कर देते हैं हम यूजर्स को सामने से. सो देयर आर चैलेंजेस दैट वी आर स्टिल सॉल्विंग, बट आई थिंक द वे आई अप्रोच इट इज, मैं सारे चैलेंजेस नहीं समझ सकती. कुछ अगर पैशन से कोई चीज स्टार्ट करी है, मुझे नहीं पता आगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. द ओनली थिंग दैट हेल्प्स इज कीप अ माइंडसेट ऑफ कि ठीक है प्रॉब्लम आएगा देख लेंगे, वी विल फिगर आउट अ सोल्यूशन. एंड इफ यू गो विद दैट फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस स्टार्ट करो, लुक एट द प्रॉब्लम, उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके कीप सॉल्विंग इन पार्ट्स, हो जाता है. एंड अभी तो मतलब बहुत टाइम हो गया ऐसे ही अप्रोच करते हुए. I think that's one thing that's been working for us each time. वाओ मैम, मतलब एक इतने एक्सपीरियंस के बाद भी द रॉनेस यू आर सेइंग कि आप अभी तक चैलेंजेस को फेस करते हैं, उसे डे टू डे बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट इट. तो मैं आपने कहा कि जैसे कि एमवीपी की बात आती है, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, क्योंकि इनको मार्केट से वैलिडेशन मिलना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि हमको आयुर्वेदिक या नेचुरल प्रोडक्ट की रेंज को भी स्टार्ट करने के पहले एमवीपी करना चाहिए क्या, और ये कैसे कर सकते हैं हमको? नहीं देखो, एमवीपी का जरूरत तो ऑब्वियसली हर एक बिजनेस को ही है. सो एंड आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट्स, व्हाइल आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी गेट्स इट, सबको इनहेरेंटली पता है कि नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स क्यों कैसे होते हैं, क्या बने होते हैं, बट वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा मार्केट में या नहीं इन द फॉर्म दैट यू आर प्रोवाइडिंग. लाइक आई गिव यू आर एग्जांपल, जेमे फ्रेश में हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स जो है दे आर नॉट न्यू. मार्केट में देयर आर ब्रांड्स जो मतलब रीठा, शिकाकाई, आंवला, चंदन, कलौंजी इज अनियन सीड बेसिकली, तो अनियन हेयर ऑयल, अनियन शैम्पू, ये सब है मार्केट में. द फॉर्म इन विच वी आर प्रोवाइडिंग इज स्टिल न्यू. सो उसका एमवीपी करना तो जरूरी है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स लोग समझते हैं उसकी नीड देयर फॉर मार्केट में है, बट उस चीज को जिस तरह से कोई कंपनी लेकर आती है मार्केट में, इन आवर केस हम इन प्रोडक्ट्स को एक बहुत ही ऐसे फॉर्मेट में लाए हैं जिससे यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो यूज करने में. जैसे मैंने भी बोला, ये रीठा, शिकाकाई, आंवला, इन सबके पाउडर्स अभी भी मिलते हैं मार्केट में, बट द करंट जनरेशन डजंट यूज इट बिकॉज उन पाउडर्स से मतलब कई बार रेजिड्यू रह जाता है बालों में, वो मिक्स नहीं होते, तो उनको यूज करना मुश्किल है. आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट प्योर, मतलब दे आर आल्सो प्योर एंड दे आर दे विल आल्सो डू द सेम गुड दैट आवर प्रोडक्ट्स डू. बट आर मतलब व्हेन वी स्टार्टेड, आर होल premise was कि can we give it to customers in a form, especially the current modern Indian consumer, in a form that they are used to using. So our shampoo should look, feel, experience like any other normal shampoo that people are used to, so that उनको habit change ना हो. So उसका भी करना जरूरी था कि लोग यूज करेंगे या नहीं. लाइक मैंने बोला ना कि हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ भी केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं जाता, तो एक्चुअली कुछ जो हमारे वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्रिज में रखना पड़ता है. सो उसके तो एमवीपी करना बहुत जरूरी था कि लोग इस फॉर्मेट में यूज भी करना चाहेंगे प्रोडक्ट्स को या नहीं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट फॉर एवरीथिंग दैट यू आर लॉन्चिंग, वेदर इट इज इन अ स्पेस दैट exists, doesn't exist, how you are proposing the solution to the customer, तो उसका एमवीपी करना जरूरी होता है मेरे ख्याल से. तो राइट. मैम, आप जो इतने फ्रेशली मेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपने कहा कि आपके प्रोडक्ट्स को कुछ फ्रिज में रखना पड़ता है, तो जब हम फ्रेशली मेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इवन कस्टमाइज प्रोडक्ट की बात करते हैं, एंड इवन सर्विसेज की बात करते हैं, तो उसमें स्केलिंग में थोड़ा इश्यू आता है. सो आपने ये कैसे किया कि, और आपके आगे के प्लान्स क्या है स्केलिंग को लेकर, और आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है अपनी कंपनी को लेकर? फ्यूचर एस्पिरेशन तो ये है कि मुझे इंडिया के हर घर में हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विस पहुंचाना है, क्योंकि मुझे लगता है इसका नीड सबको है एंड सबको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है. बिकॉज जो गुडनेस फ्रेश इंग्रेडिएंट दे सकता है आपको और जो बेनिफिट दे सकता है वो कुछ नहीं दे सकता. बट हैविंग सेड दैट, यस देयर आर चैलेंजेस इन स्केलिंग, एंड आई डोंट डिनाई कि this is not something जो current जो how does a product or a brand scale. बेसिकली एक आपने कुछ बनाया या आपने एक मैन्युफैक्चरर से कुछ बनवाया, उसको ब्रांड किया और उसको आपने डिफरेंट सेल्स चैनल्स में डाल दिया, चाहे वो आपका वेबसाइट हो, चाहे कोई मार्केट प्लेस हो लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह, या फिर आपने ऑफलाइन रिटेल में डाल दिया. दैट्स हाउ यू सेल, राइट, अ प्रोडक्ट. इन आवर केस
the issue is because इसमें ये वाला format of personal care doesn't exist. तो अगर मैं Amazon पे भी उसको लिस्ट करने जा रही हूँ या फिर मैं किसी नायका पे लिस्ट करने जा रही हूँ, वहां पे द फॉर्मेट इज दैट दे वांट, वो लोग बोलते हैं कि हमारे वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स रखो. अब उनके वेयर हाउस में हम रख सकते हैं लेकिन वहां पे फ्रिज चाहिए, प्लस उसकी डिलीवरी. नाउ ऑल दीज आर वेरी स्टैंडर्ड चैनल एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन दैट एग्जिस्ट टुडे. इस पर्टिकुलर चैनल मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कोई नहीं बनाया गया, ना चैनल बनाया ना लॉजिस्टिक्स बनाया. द ओनली थिंग दैट कम्स रिमोटली क्लोज इज द फूड सप्लाई चेन, राइट? जैसे वो स्विगी जोमैटो जो डिलीवर करते हैं किचन से उठा के, दैट इज द क्लोजेस्ट दैट कम्स टू द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर मेकिंग इन द पर्सनल केयर स्पेस. तो स्केलिंग इश्यूज तो है इसमें, बट गिवन दैट देयर इज अ स्विगी एंड अ जोमैटो दैट हैज प्रूवन दैट दिस कैन बी डन इन फूड, there will be more categories, and ours is of course one of the first in this space. There will be more categories like this that will come up in other spaces apart from food, where freshness of products and pure raw material based products will start coming out in the market eventually. I think we are a little ahead in our in the way we are with our own offering of products. But the point is, because the customer wants it, we will figure out our channels to do it. And recently, in last 4 months, since the last 4 months, we've also started doing services with our product. So that is a channel for us, which is in which people are getting to experience the product while they also understand कि कैसा काम कर रहा है उनके स्किन पे, हेयर पे, उनको खरीदना है नहीं खरीदना. Like that, multiple channels will evolve. I think with the as a category starts growing, right? Because the customer love is there, we as a business or anybody else who enters this business, we'll figure out our way of creating this space. So I don't know if I answered your question completely. Scaling में challenges हैं, but I think we're solving them one by one as we grow. राइट. आपने इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में बहुत टाइम तक टाइम स्पेंड किया है. आपने काफी मल्टीपल टाइम्स एंटरप्रेन्योरशिप में भी किया है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी किया है. सो क्या आप अपने कुछ वैल्यूएबल लेसन शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? वैल्यूएबल लेसन तो बस यही है कि लगे रहो और you will eventually succeed. See, I've actually I've had the chance to watch many great entrepreneurs build their ventures at a very 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 closely. And I mean, when I was a venture capitalist at that time, we invested in some businesses very early on. Sugar Cosmetics is one of them. So I've seen Vinita and Kaushik, their struggles that they talk about today, I've seen them happen. And similarly, a lot of other brands. There's Giva, there is FabAlley India, there are a lot of the fintech companies like LoanTap, etc. In सबको मैंने like from the beginning देखा है, and all these are great companies today because of the perseverance of the entrepreneur. And I think that is one learning that I'm glad I had, because without having to go through it myself for all these years and having seen it in the journeys of other entrepreneurs, that is one biggest learning that I think is the most meaningful thing that I've derived from all my career so far. And हम लोग को मतलब आजकल जब हम there are struggles every day in this, trying to create a category, trying to really scale that, trying to service customers. That's a very very big challenge, right? जब भी कोई challenge आता है, बस हम लोग आपस में एक दूसरे को ये बोलते हैं कि हो जाएगा, don't worry, we'll figure a solution, लगे रहो. Just perseverance is, when entrepreneurs say that perseverance is the biggest thing that you can have and you just have to be at it, I think उससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं होता. ये हम लोग अपनी रियल लाइफ में रोज देखते हैं. एजुकेशन, एक्सपीरियंस, nothing really comes close to then just keep at it, keep doing it. And वो जो वो होता है ना, तो फिर अपने आप चीजें things happen for you, right? Yeah. मैं आपने बहुत सही कहा, लगे रहो. एंड एंटरप्रेन्योरशिप में लगे रहो से अच्छा कोई लेसन नहीं है इससे बड़ा. आपने कहा कि हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, नया. मतलब क्या एमबीए, मतलब आप खुद आईआईएम लखनऊ से है, आपने कई जो एंटरप्रेन्योर्स को देखा हुआ है, शुगर कॉस्मेटिक्स वो भी आईआईएम से है. सो क्या एमबीए एंटरप्रेन्योर जर्नी को इजी बनाता है या उसमें कुछ हेल्प कर पाता है? मैंने वही बोला, एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे तो ये लगता है कि MBA, I'll tell you where MBA helped, at least in my career, and I've seen a lot of my peers from MBA also say that
it teaches you again, ये perseverance जो बोल रही हूँ ना मैं, I think वो वहां से आता है. एजुकेशन ऑल ऑफ दैट ठीक है, मतलब देयर आर मच स्मार्टर पीपल नॉन एमबीए एज वेल. एंड एमबीए से तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें बिजनेस चलाना आ जाता है, डे वन पे कभी कुछ नहीं आता, वो करने से ही आता है. सो बट देन आई थिंक द वन थिंग दैट एमबीए डिड टीच मी वाज perseverance. There was a lot of too many things that you had to do at the same time. You could have given up, or you could have just taken on the challenge, said कि ठीक है करते हैं. Sometimes there's no option also, right? तुम्हारे assignments हैं, तुम्हारे lectures हैं, तुम्हारा तुम्हें अपना CV बनाना है, तुम्हारे पास competition में participate करना है. You also have to get decent grade, नहीं तो placement नहीं होगा. मतलब there are all of these challenges and crunched in such a short time that that's when you really start pushing yourself hard. I think that's one big trait. Then you do that for 2 years every day. It builds character is what I feel. So that's the one thing. Studies ठीक है, तो I think, like I said, anybody who gets into entrepreneurship starts at the same footing. I don't think anybody has there's no chip on anyone's shoulder because of whatever they've studied, whatever they've done. Everybody starts at zero. And you would have seen entrepreneurs who've become super successful today, created amazing ventures, who ask for the educational background. Nobody does, right? It's also only about what they've built. And वो रोज करने से ही आता है. मतलब मुझे नहीं लगता एजुकेशन तुम्हारा बेस बना देता है, but that's about it. आपको वहां पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी मिला होगा शायद कॉलेज में, और मेंटोरशिप भी शायद मिल पाई होगी. सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब आपने कैसे अपने के जर्नी में मेंटोर्स ने क्या हेल्प किया, या एक मेंटोर नेटवर्क सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए? I think it's very important, more because of the struggles every day. Sometimes you start doubting yourself कि तुमने जो डिसीजन लिए वो सही है या नहीं. Are you steering the company in the right direction? What will be the impact of your mistakes? So those are, sometimes these can get very overwhelming. So that's why mentors होना important है, because then you can go talk to them. So these can be anybody. This can be your friends also. These can be people who've been your classmates पहले, or these are people who are currently running their own ventures. You learn from their journeys. So I think it's very important to have at least one person with whom, independent out of your company, your family, your friend circle, somebody who you can go share your current challenges with, your current status with, even successes, happiness, all of that. So it opens up your mind to new possibilities. And I do that. मैं तो actively, I have 2 or 3 people like that, and I actively go and meet them, try and meet them once a month. नहीं हो पाता तो at least I keep connected with them. कुछ ना कुछ हर बार, कुछ नहीं तो बस जाके बताओ कि this is what is happening. And discussion से कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही. So I really believe in this whole thing of having some mentors around. It helps, it really makes the journey more worthwhile. Right, मैम. मैम आप खुद एक वेंचर कैपिटलिस्ट रह चुकी है. आपने शुगर कॉस्मेटिक्स, फैबएली, इंडिया, जीवा, इनके साथ काम किया हुआ है. और आपने खुद जेमी फ्रेश के लिए भी अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स रेजिंग किया है. सो फंड्स रेजिंग में और इन्वेस्टमेंट रेजिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए किसी भी स्टार्टअप को? आई थिंक strategy तो कुछ नहीं होता. It's more about your business, what you're building and why are you building. So because we were I've had the chance to be on the other side and evaluate businesses. What I remember, हम लोग तो ये देखते थे उस टाइम अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते थे, तो उस टाइम तो कुछ बिजनेस होता नहीं है, होता भी है तो बहुत छोटा होता है. So that time we just bet on the entrepreneur. So you try and understand who the person is, what are her or his motivations for doing this. Will they be able to see this through? The challenges तो आएंगे, सबको पता है. How much will that person not back off and say कि यार बस अब बहुत हो गया, let me just give up? Because तुम तो अपना पैसा डाल रहे हो as an investor. I understand even the my investors who put in money, same for them. It's my responsibility to handle that money well and to actually make more money for them, because otherwise what's the point? And which is what we used to look for when we would also invest in entrepreneurs. Are they, again, it comes back to the whole thing of perseverance. Will this person stick around and actually make something of the company so that all of us can benefit?
लगे रहो वाला एटीट्यूड है कि नहीं है? ये सब जगह होता है, मैं बता रही हूँ। मैम एक एंटरप्रेन्योर में मतलब फिर एक जो की स्किल और क्वालिटी होनी चाहिए, इसके क्या क्या की स्किल और क्वालिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, जो एक हर एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए? दैट इज I think apart from perseverance, I think one very important thing which again only सिर्फ करने से आता है is the ability to handle people. तुम अकेले सब कुछ तो कर नहीं सकते. तुम चाहे even in the you let's say you are 2 or 3 or 4 friends who start together, you will still need a team. And how do you manage that team and how do you actually motivate them to work better than what you do? And ये मुझे पहले लोग बोलते थे, मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब actually it makes so much more sense, these words that a lot of entrepreneurs have already said before me. And I'm experiencing this right now. Your team has to do better than you, otherwise your business will never grow. You can't be the best person in your team, right? Ever. You have to hire better than yourself, and you have to keep motivating them to do better than what even you can. So that is one skill which I think if some people have inherently, they'll make great entrepreneurs, honestly, because then people will rally behind them. Others should want to come work with you. They should want to work together in the team and create something with you. वो क्वालिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपने भी टीम की बात कही, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक कंपनी कल्चर को कैसे बनाया जाए, और आप एम्प्लॉय हायर करने के टाइम कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं हायरिंग के बाद? स्ट्रॉन्ग कल्चर तो आई थिंक देखो हमारा अभी भी बन रहा है. द ओनली थिंग दैट आई लिव बाय एंड आई नो दैट माय एंटायर टीम आल्सो लिव्स बाय इज we just be honest with what we are doing. Everything that you do, I mean, just be open about it. गलती किया तो बोलो, it's okay. There'll be others who will come and pitch in and help. It should never get into a state of I've worked in large corporates and वहां भी ना काफी बार होता है अपने आप को बचाने के लिए तुम there's this whole culture of कि यार ठीक है, I don't care what's happening to the company, I'll only watch out for me. And this happens when teams become very large, and I think that's where it's very important to create that culture from the beginning, and that's what we are trying very hard to create. The sense of ownership in every single person in the team, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो टीम में, वो एक फीलिंग जो होता है ना कि मेरे को इस कंपनी का एक पार्ट बनना है और इसको ग्रो कराना है. So that is, that's the kind of culture I think that works very well. So that's what we look for when we hire people. हम लोग तो यही देखते हैं कि how much does that person feel for the space. Company में तो बाद में आएगा, because once they join the team, then they'll start realizing, whether they fit in, not fit in. But at the time of hiring, we really look for कि उनको एक तो स्पेस कितना समझ आता है, आता भी अगर नहीं भी आता तो is it something that they really want to learn and want to work in? Because एक चीज हम लोग this is something that I mandate across the board. Anybody who joins the team, so we have this whole policy, employees get free products for life. जब तक तुम employee हो तुम्हें सारे products free मिलेंगे हमेशा. Wow. So you have to use it, yeah, and I mean you have to use those products, believe in them. Only then will you be able to, let's say the person who's making the products, or the person who is selling, or the person who's even talking to customers just for the orders. Everybody should know how the experience of using, feeling the product is. Only then will they be able to, build that sense of ownership. Because अगर वो ही believe नहीं करेंगे कि ये product क्या है, मैं क्या बेच रहा हूँ, that feeling if they have, then very easily it can get into the thing, ठीक है कंपनी कुछ भी हो मेरे को अपना watch out करना है. That's what I'm trying to avoid. So there have been times, and I'm infamous for this in the company. मैं लोगों को force भी किया join की use करने को कि तुम अगर use नहीं करोगे तो मैं डांटूंगी types. But it's all for the good. मतलब all the products are amazing. So luckily everybody in the team now believes in them and uses the products regularly. So yeah, that's the kind of thing that we try and figure out. How much do they feel for it? And even if they don't, will they be able to adjust selling this or living this space every day? एंड ये आपके ब्रांड में दिखता भी, मतलब मैं आपकी वेबसाइट को गो थ्रू किया, आपके लोगो से लेके सब कुछ जो कंटेंट लिखा है, was like everything is so aligned. Even I'm trying to build a brand by myself, and I have to look at everything personally. But आपके बारे में हर चीज एकदम perfectly aligned है. I was like एक startup इतने अच्छे से aligned है, इसी वजह से I think है because आपके हर एक employee के वो use कर रहा है, वो feel पता है what
it is and how to express it to the audience. Well, it Ma'am, takes time. If you'd seen the first version of our website, you wouldn't have said this. okay. गलती कर करके सीखा है. या लगे रहो वाला जोश रहता ही है एंड दिस आज वो दिख रहा है आपके ब्रांड में. एंड मैम अभी हमने आपसे बात किया फेलियर्स के बारे में कि जो होता है, सो आप फेलियर्स और सेटबैक्स को कैसे हैंडल करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, और आप जैसे कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे जिससे आपने बाउंस बैक किया हो? यार बाउंस बैक तो रोज ही करना पड़ता है, आई थिंक, बिकॉज सी देयर आर दी स्मॉल फेलियर दैट हैपन एवरी डे. ओके, थिंग्स लाइक एक कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गया. Some customers really angry at how, let's say, the product, the service didn't go right, or this product didn't work for me. ठीक है, product may not have worked for you, but if they start blaming you as a company कि नहीं तुम्हारा product खराब है, this that, you face these every day, and the ability to bounce back from it is basically just believing in the fact कि ठीक है, I know that everything is, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, हमारा सब कुछ एकदम सही है. It does happen that things can go wrong, be it a customer, be it an employee, be it whatever. किसी गलती भी ना हो तब भी कुछ खराब हो गया. Suppose I don't know, order गलत पैक हो गया for whatever reason. Everybody did everything right. One check did not go right. In final जल्दी जल्दी में everybody was, let's say, doing the right thing, but निकालने में एक चीज रह गया. मतलब whatever. There are daily issues that happen. And we just have to, like, and this is not just for me, the entire team does that. We just back ourselves ki theek hai, we take ownership. In fact, that's why I said ownership becomes very important. Every person in the team, they themselves come up and say theek hai, I take ownership for this. Kahin pe agar loss hua hai company ka, people actually put in money personally sometimes and say ki nahi, ye meri galti thi. Or we just encourage ki tum, jiski bhi galti hai, theek hai, aage se nahi hoga. Let's take learning from it, let's move on. So those are the kind of things that we try and put in place every day. But I don't have an anecdote. I mean, I really don't have a big incident where I can state that, or maybe I can't recall it right now. But these are things, like I said, every day there are failures that happen, and we just try and keep a positive mindset and just keep moving on. That's the whole thing, because we know ultimately that एक वो sense of विक्ट्री भी आता है जब कुछ अच्छा हो जाता है. कस्टमर ने बहुत अच्छा फीडबैक दे दिया, एंड some amazing review we got, and somebody actually said, what, mera skin is my best ever today. Those things give you a high, so that's what you work for. So we just, whenever something happens on the other side, we just try and steer it, saying ठीक है, कल ठीक हो जाएगा, इसको बस ये ठीक कर लो ताकि अगली बार this becomes fine. So that's how we operate every day. बहुत अच्छा कहा आपने. मतलब हमको रोज कुछ ना कुछ आता है, हमें रोज बाउंस बैक करना पड़ता है. मैम, ये तो हुई कंपनी बिजनेस की बात. आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन कर दे एक एंटरप्रेन्योर की तरह, और आप एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक कुछ स्ट्रैटेजीज या कुछ टिप्स देना चाहेंगे हर एक एंटरप्रेन्योर को? बस कई लोग कहते हैं सिर्फ वर्कोहॉलिक होते हैं, स्पेशली इन स्टार्टअप्स. So see, this is very important, and I've also been like that. Okay, I've lost sleep so many times because of stress, eaten whatever. So a lot of times work pressure में तुम भूल जाते हो ये सब. But this is something we are actively, now even in our team, we are making sure that one is, ठीक है, काम है ज़्यादा, and we all know that there is a lot of work. We all end up working crazy hours. At least तुम्हारा खाना पीना, exercise, take out that 1 hour for yourself in the morning, evening, during day, whenever, just to, let's say तुम्हें exercise करना है, या तुम्हें you want to just go do something, या तुम्हारी hobby है कुछ. I really encourage people to do that. जो नहीं करते मैं उनको push भी करती हूँ कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, why you not following your heart. It's okay, मतलब 1 घंटा तुम, if you give up work, कुछ नहीं होगा. Just ensure you as a person are healthy, and you are feeling good. Only then will you be able to come and do good at work. So at least personally, मैं तो I do that 1 hour I take out in the day, चाहे वो सुबह है before I start work, or end of day है after I end work, for either yoga or dance or some kind of work. I do that thing every day, and slowly I'm seeing many team maybe people have started doing it. But I think it is something that people are also realizing. I'm of course part of many such founder groups and all. I think slowly that realization of the fact that there has to be a balance in everything. And yes, entrepreneurship, while it's a super hard journey, doesn't have to be just about slogging and just about killing yourself for creating something. You also have to
if as long as you're healthy and you're fine, you'll be able to do much more. So that's what we try and do. And मैं personally तो बहुत ज़्यादा believe करती हूँ इस चीज़ में. So I mean, whether it be it diet, fitness, or any of these, hobbies, etc. At least दिन का 1 घंटा निकालो, that's enough for you. It just helps keep your mind calm. It helps keep your fitness levels okay. And then rest of the day है ना काम करने के लिए, करो, कौन मना कर रहा है? Absolutely. अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो वो अगर हमारा खुद का शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो हम उससे कैसे भोग पाएंगे, उससे कैसे बेनिफिट ले पाएंगे. सो खुद का लाइफ इज ऑल्सो, खुद का हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम. मैम, आप कुछ रिसोर्सेज, कुछ बुक्स या कुछ पॉडकास्ट शेयर करना चाहेंगे जो एक एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए? इट्स अ मस्ट फ्रॉम योर साइड. Actually, I am a very bad and wrong person to do this because I used to read Kelly. I've given up reading completely. I do listen to a few podcasts. I mean, some of them are just general. Actually, a lot of them are just, news-based podcasts. So that's my way of making sure that I catch up because I don't have time sometimes to even read the newspaper. And I miss doing that because especially, when you're coming from a whole, because I was a venture capitalist, you have to be really, tuned into what's happening in the economy, what's happening in the industries at least that you cover. वो सब पता होना चाहिए था. And from there, reading and being up to date was something that the job required. From that to now, I generally don't have the time to sit and read through everything and improve knowledge. So I do listen to a lot of these news-based podcasts, or even anything that I don't know, मैं उसको search करके. So podcast is my go-to medium to keep myself up to date with either news or concepts, whatever. I'm a bad reader. Like I just don't. मैं book लेके आती हूँ, वो पढ़ी रह जाती है. So I can't recommend a book myself. Yeah, happens. मैम, आप जो अभी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, आप उन्हें कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे जो उन्हें एंटरप्रेन्योर जर्नी में यूज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? So if you haven't started, ये मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, like people who are thinking of starting up, I think just be very, very clear about the why of entrepreneurship and why you want to be, why are you the right person to do it. That needs to be very clear in your mind, and you have to have a very, very strong reason why. मतलब once you answer that why, do you ask yourself, is that strong enough for me to sustain for the next 5 to 7 years as I build this business? Because ये question ना तुम्हें हर बार आएगा. Anytime the first failure hits you, then you like, अरे यार क्यों कर रहे हैं ये, इससे अच्छा तो ये कर. अगर तुमने, if it's not that strong enough for you, इससे अच्छा तो पहले ही थे. These kind of questions, when they start happening, and then when your conviction is not there yourself, that's when things start to fall apart. इसीलिए know that very, very strongly. And even if, let's say, even people who have started up, of course, people who have moved ahead in their journeys, unka to why is very strongly answered. But people who are still very new, maybe who are still trying to establish ourselves, that includes us. We are also, I won't say we're well established yet. Keep asking yourself that question. Why are we in this? What are we doing this for? And you'll keep finding answers. And then, you'll be able to move the business in the right direction accordingly. So basically keep questioning that every time. Of course, don't question your conviction, but question how you're doing things. How are you serving customers right? तुमने जो सोच के business चालू किया था, is that purpose being met? So those things I think you should constantly keep asking yourselves. If you already started up, if you haven't, then be sure of what you're doing and have a very, very strong conviction before doing that. मैं तो काफी लोगों को, इनफैक्ट people who haven't started up, I was at one of the sessions at a college a couple of months back, and my advice to the students there was कि ठीक है, I mean if you have a very strong idea, then yes, definitely go for it. But if you don't and you're still exploring, जाके कहीं startup में काम करो. It'll give you a very, very real sense of what goes on in an early stage or whichever stage startup you choose. एक बहुत real perspective मिलेगा, and then you will know whether you want to do this every single day for the next, like I said, 5 to 7 years. It's almost like, an equivalent of, I mean, for lack of any other comparison, I always say it's like a live-in relationship. If you think that this is something that works, then take the next step, right? Right. Yeah.
थैंक यू सो मच मैम, आप वक्त निकाल के आए हमारे साथ, आपने अपने जर्नी को इतना ब्यूटीफुली शेयर किया, आपने अपने फेलियर, सेटबैक्स और अपनी सक्सेस और अपने अपने हर एक चीज को खुल के हमारे साथ शेयर किया। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी खुद डिसाइड करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में। जो उन्हें सेटबैक्स आते हैं ना, व्हेन यू सी कि बाकी लोग भी सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एंड रोज दे आर बाउंसिंग बैक, सो इट गिव्स देम स्ट्रेंथ कि यस वी कैन आल्सो डू इट एंड वी कैन आल्सो मेक थिंग्स अप। सो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े, टाइम निकाल के यार। Thank you for having me, Aditi, and good luck. Yeah, happy to have done this. Thanks for inviting me.